वो सिर्फ तुम यूट्यूब बना रहे ना। Yes, we are doing it. Yeah. थोड़ा तैयार होना भी जरूर बढ़िया भाई, पहली यूट्यूब वीडियो भाई. अच्छा दिखना चाहिए है ना। Yes, let's go. Hi. हेलो, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा एनर्जी के साथ बोलते हैं। हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा फूड ब्रेक लेते हैं भाई, लिसन नहीं पा रहा भाई। हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो जो कि प्राइवेट नहीं होने वाली है। तो लेट्स गो। इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन जो तुम लोगों ने मेरे से मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पूछे थे, स्पेशली फॉर दिस यूट्यूब वीडियो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पहले ही बता देता हूँ, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आई डोंट नो इंस्टाग्राम ने कहाँ गायब कर दिए। उनका कुछ अलग ही ग्लिच चलता रहता है हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन। ठीक है, उन्होंने मेरे आधे से ज्यादा क्वेश्चन गायब कर दिए, विच आई हैव नो आइडिया कहाँ गए। आई ट्राइड मेरे को मिल जाए, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहे हैं। और जो कुछ कुछ याद है और कुछ कुछ जो मेरे को दिख रहे थे वो मैंने सेव कर लिए हैं इन माई लैपटॉप। तो बस मैं वही वाले आंसर करने वाला हूँ। एंड आई हैव माई न्यू मैकबुक नियो इन फ्रंट ऑफ मी। इसमें सारे क्वेश्चन मेरे को दिख जाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट मैं पहले ही सारा बेसिक वाला क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज लोगों को मेरा नाम तक नहीं पता है, क्योंकि मेरा यूजर नहीं मेरे नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ऑफ कोर्स माय नेम इज मोहम्मद अली। आई एम 19 years old। ऐसा लग रहा है मैं अभी पोएम गाने वाला हूँ। आई डू नॉट लिव विद माई पेरेंट्स। आई मूव्ड आउट फ्रॉम माई हाउस 3 years ago for my design school preparation. I just completed my first year of college from Jamia Millia Islamia, and the degree that I'm doing मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, because I want to explain more about it. And I have 2 siblings. I am the youngest one। मेरे बहुत नखरे रहे हैं हमेशा से, तभी I am the way I am। So I think this is all। अभी let's start with the questions। Okay, so the first question is obviously again very basic। My height। हाइट की स्पेलिंग गलत है वैसे तो, बट ठीक है। हाइट से याद आया, मैं बहुत बोना हूँ। यस आई एम बोना। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपने घर में सबसे लंबा हूँ अपने पापा के बाद। मेरे पापा से भी मैं इतना सा लंबा हूँ, सॉरी छोटा हूँ। एनीवेज हाइट इज अराउंड 5'5", 5'6"। कितना ही बताऊँ तुम्हें, कौन सा पता चल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, लाइक आर यू स्टडिंग और सम व्हाट। ऑब्वियसली आई एम जस्ट स्टडिंग, एज आई टोल्ड यू आई एम इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स। मैं उनसे ही पैसा मांगता हूँ अपने खर्चे के लिए। ऑफ कोर्स यस, आई डू नॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट व्हिच इज नॉट रियली पेइंग मी एज मच अभी। ओके सो या, आई एम ऑल डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स एंड आई एम जस्ट स्टडिंग। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 कॉमन। इतने सारे लोगों को इंटरेस्ट है मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। Like what is the course that I'm pursuing? I just completed my first year. I am pursuing a bachelor's in fine arts and my specialization is applied arts. This course is really about fine arts, of course. You get to paint, you get to sketch, you get to make sculptures, you get to make clay pots, whatever. You must have seen the reels where I post my assignments. PFA in my college is all about that. You can go and check out my semester 1 and semester 2 की reels में I have mentioned what subjects I have. I also have English and Urdu and history and fundamentals of applied arts as my subjects, जो कि theoretical subject है, इसमें हमें लिखना पड़ता है। That's all about my degree। ओके किसी ने पूछा है कि डिज़ाइन में कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है मेरे को। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली नॉट अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशली इन डिज़ाइन, बिकॉज मैं BFA कर रहा हूँ और ऑफकोर्स मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डिज़ाइन की तरफ इंक्लाइंड है। बट आई थिंक इफ़ आई वर टू चूज़ तो मैं इधर UI/UX चूज़ करता और मे बी प्रोडक्ट डिज़ाइन, बिकॉज आई फील लाइक आई थिंक मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें। और इफ आई टॉक अबाउट स्टेबलनेस तो उधर मेरे को थोड़ी सी मिल जाएगी आई गेस। अभी ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी आगे का मुझे भी नहीं पता। अगर मैं चूज़ करने बैठा तो हो सकता है मैं कुछ और चूज़ कर लूँ, यू नेवर नो। Moving on to the next question. How do you edit your videos so effortlessly? This question is really again very common in my comment section, in my DMs, in my story replies, etc. etc. Talking about editing, there is 2 types of editing that I do. If you check out my account, you will see पहले I used to make literal edits। इसमें बहुत ज़्यादा editing होती थी, like effects and filters and different type of text, different type of filters। वो मैं पहले करता था जो कि literal edits होते थे। One type of editing is that। The second type of editing is the one जो कि मैं अभी recently अपने ट्रिप का डाल रहा था। It was थोड़ा सा little effort और थोड़ा सा high effort both, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा typical editing नहीं थी। Right, for the type 1 I used CapCut, and for the type 2 I use Edits app by Instagram, which is really nice if you are just starting with your content। Edit your reels and post via Edits app। उसमें जब तुम एक्सपोर्ट करते हो और जब पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम से क्वालिटी गंदी और खराब या डिग्रेड नहीं होती। वो एग्जैक्टली
सेम क्वालिटी में ही पोस्ट करता है। आई वुड सजेस्ट एडिट्स आपका यूज करना बिकॉज इट्स गुड फॉर कंटेंट कि तुम्हें डेली बेसिस पर डालना है और तुम्हें कैपकट के लिए वीपीएन वगैरह करना पड़ता है। अगर तुम्हें वाला प्रोसेस नहीं यूज करना है तो जस्ट गो फॉर एडिट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट द सेम बट इसमें पिक्चर, हाउ डू आई एडिट माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स? फॉर पिक्चर्स आई ओनली यूज Snapseed, and when it's about clicking pictures I use Dashcam, which is like the best. Dashcam में you do not need any type of editing. They're already so much edited and they make the pictures look very grainy. तो उसमें editing की ज़रूरत नहीं पड़ती. That's it. Moving on to the next question. Next one is about again my major, and second part of the question is how did you decide you want to go for artistic career? So obviously since childhood I was more of an artistic kid, right? But in my 11th grade I chose PCB as I did not have humanities in my school, so I had no option to even go for humanities. मेरे पास option नहीं था. I had to go for PCB, which I thought was very okay because मैं पढ़ लेता, लेकिन मैंने इसलिए भी चूज किया बिकॉज आई थॉट अगर मेरे को बाई चांस आगे जाके चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट? इवन आफ्टर डूइंग BFA आई कैन गो फॉर एनी scientific degree later on, right? But I decided that I wanted to do this artistic thing because I thought PCB or maybe NEET specifically was something that I was not really interested in. It was not something that I was looking forward to do for the rest of my life. Like, you know, doctor की पढ़ाई is just like you have to study for almost your 30s and 40s, and I am not really that person जो इतना ज़्यादा पढ़ सके. I convinced my parents that okay, NEET is something जो मैं करने को मैं कर लूँगा, लेकिन I wouldn't be that much happy. So I chose, instead of doing something which I might not enjoy doing, I should choose something जो मैं दिल लगा के करूँगा, और अगर को लाइफ लॉन्ग भी वो करना पड़ता है तो मैं कर सकता हूँ. अगर मैं लाइफ लॉन्ग साइंस पढ़ता तो आई थिंक वो मैं मर के पढ़ता. You know what I mean? Yeah, I think that is my reason. Next question is थोड़ा सा interesting. Okay, they're asking what is the first thing you will do when you become a hypothetical PM of India? I was reading this question before the video. I had the answer in my mind because if I were the PM of India even for a day, तो मैं पहले दिन ही पहली चीज़ ही मैं ये करता कि मैं reservation quota in the entrance exams हटाता, because I am from the general category and I hate it. I hate reservation because I was preparing for this one entrance exam in 2024 and I did not get college of my dream just because I was from a general category. I was this close to getting qualified, but I did not because I was from the general category. So that is the first thing that I will do if I I become Modi ji for one day. Moving on to the next. What is your dream like? What next you will do in the upcoming years? Please honestly answer this question. Okay, so in my upcoming years, I'm looking forward to do things apart from my degree as well, not just depending on my college for everything. I will be continuing my degree, but I want to do things side by side as well. For example, I am doing content creation, which was thing that I wanted to do since so long, right? And the other things that I'm looking forward to doing is gaining a lot of experiences in internships because I have never experienced internship होती कैसी है, right? I have no idea. Looking forward to travel more and make my parents feel मैंने PCB ना लेके कुछ तो अच्छा कर लिया है, कुछ तो मैं कर सकता हूँ. अगर मैंने PCB नहीं लिया और मैं नीट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ये दिखाना है कि PCB से ही नहीं होता है सब कुछ भाई, और भी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए. That is what I'm looking forward to especially. Moving on to the next, we have what's something you learned from not getting into the college you wanted to. थोड़ा सा ज्ञानी हो जाऊंगा मैं इधर because there is a lot that I have learned throughout the process of waiting for the results, throughout the process of counseling, throughout the process of getting the first, second, third list. It is tiring as fuck. One thing that I learned from not getting into the college that I always wanted to get in was, I learned this after getting into the college that I am in right now. It's again very common, but whatever happens, genuinely whatever happens for a reason. because अगर मैं जामिया में नहीं होता और मैं NIT में होता तो आई थिंक काफ़ी अलग लाइफ होती है, एंड आई वुडंट हैव बीन डूइंग थिंग्स जो मैं आज कर रहा हूँ, एंड जिनके लिए मैं आज प्राउड फील करता हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता, राइट? तो मुझे लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड इट इज़ जेन्युइनली ट्रू. इवन इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग विद यू फॉर अ टाइम बीइंग, it is happening for you to learn something new. And in this college I am in right now, it has taught me things which I think NIT में जाके मैं नहीं सीख पाता, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता. एंड अगर मुझे वो कॉलेज नहीं मिला है उसका रीजंस मुझे ऊपर वाले ने ऑफ कोर्स दिखा दिया कि ओके इट्स ओके अगर तुझे वो कॉलेज नहीं मिला, बट दिस विल टीच यू समथिंग जो वहाँ पे जाके नहीं हो पाता. बट आई लव द पर्सन दैट आई एम बिकमिंग इन दिस सिटी, इन दिस कॉलेज, विद दीज पीपल. I love
everything. Touch wood. Touch wood. We'll move on to the next question. Next question is about how do you always stay creative? What makes you different from others? I do not really stay creative all the time. लेकिन ऐसा कुछ सच है नहीं. जब भी मेरा creative block होता है तो I usually doom scroll on my phone. This works for me because scrolling through reels मेरे को new ideas मिल जाते हैं. The moment I see a reel and मेरे दिमाग में pop up होता है एक नया idea, उसी moment पे I write it in my notes app or I write it in my डायरी एंड मैं अगले दिन बना लेता हूँ उसको. इवन इफ आई एम फॉलोइंग अ ट्रेंड आई सिट एंड थिंक अबाउट द ट्रेंड in a way कि वो मैं अपने वे में कैसे करूँ instead of just copying the trend, that enhances the creative power in your mind. I do not stay creative all the time. There are days when I do not feel like doing anything and what I then do is just watch YouTube videos and do nothing. You don't have to force yourself कि भाई कुछ सोच क्रिएटिव कुछ होना होगा, वो खुद ही दिमाग में आ जाता है. तुम स्क्रॉल ऑन योर फोन बट स्क्रॉल थ्रू द कंटेंट जो तुम्हें बनाना पसंद है और watch YouTube videos related to the topic that you want to learn or you want to post or you want to make or you want to paint or you want to etc. My room makes me feel creative first of all. अपने स्पेस को या फिर whatever is around you उसको ऐसा बनाओ which inspire you to be creative almost daily. and जब भी तुम सुबह उठो तुम देखो कि यार, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा रूम ऐसा दिख रहा होता है जैसे दीवार खाली दिख रही है तो मेरे को ऐसा मन होता है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना के यहाँ लगाता रहूँ. दैट इज हाउ यू मेक योरसेल्फ फील क्रिएटिव और डू क्रिएटिव स्टफ मोर ऑफन. Okay. Next question is describe your dream goal giving this cause you love yapping. About this question, I do not really think about बहुत ज़्यादा दूर के ड्रीम्स. आई थिंक एंड आई ड्रीम अबाउट थिंग्स जो मेरे को अभी आने वाले टाइम में करनी है. Especially, for example, my biggest dream is going to Mumbai for some reason, and I think अगर मैं मुंबई में पहुंच जाता हूँ कैसे भी करके, it is gonna be a dream goal achievement genuinely. मेरे फ़ोन का स्टोरेज खत्म हो गया था anyways. So I was saying कि मैं बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचता हूँ. I think about stuff जो मेरे को अभी करना है आने वाले टाइम में, not like 4-50 साल बाद. And I want to do something in content. I want to do something really nice and inspiring for the kids in my house, for my parents, for my siblings, for me myself, obviously. Now let's move on to the next question. Next one is about your reviews on Ismail for Isabel. I want to know because I cried so much. It was genuinely a movie which I randomly clicked on when I was scrolling through Netflix and I thought let's just watch it because मैंने मिहिका का review देखा था and I had this in mind कि okay I think अच्छी ही होगी अगर वो रिव्यू कर रही है तो. आई जस्ट वेंट अहेड, मैंने उसको देखा एंड आई थिंक 10 से 15 मिनट के अंदर ही इनटू द मूवी आई वाज ऑलरेडी क्राइंग बिकॉज उसमें थोड़े से सैड मोमेंट्स हैं यार. आई मीन एंड में आते आते तो भाई मेरे पागल हो गई थी मेरी आंखें. मैं ही पागल हो गया था बिकॉज अच्छे मोमेंट्स पे भी आई वॉज टीयरिंग अप. तो मैं हूँ थोड़ा सा उस टाइप का इमोशनल. इट वॉज अ 10/10 मूवी. Next one is about favorite YouTube creators. Everybody knows at this point कि मैं कितना ज़्यादा obsessed हूँ with some of the YouTube creators. For example, Advika Singh and then Mitali this side. Obviously, I am not a medical student, लेकिन उनको देखना इतना पसंद है. I was in 12th. तब से I've been watching them and I have even met Mitali Sharma very randomly on a very random train. People thought it was scripted, but it was never scripted. How will she script a video with me? कुछ भी. And then very recently I started watching Mehika Sharma and believe me or not, I feel so positive every freaking time. Even when I watch a reel of hers, it is always so optimistically pleasing. My recent favorite YouTuber has to be Mehika Sharma. Let's go. And fourth तो मैं खुद ही हूँ अभी. Next one is not the question but it is a compliment. Maybe it is dude you got the best expressions. People do have really much of an issue with my expressions. People do actually make fun of my expressions all the time but I cannot help it. जब भी मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ it is very natural. I have no idea भाई उसको कैसे फिक्स करना है. वो मेरे अंदर का ग्लिच है. Just fucking accept it. Okay, please accept it. मैं हूँ ऐसा दिमाग का हिला हुआ. YouTube पे आ गया हूँ तो even तुम लोगों को और पता चलेगा कितना सटका हुआ मेरा खोपड़ा है. Next one is also a compliment. It is how do you become so great? Seriously, I've been following you since years. First of all, thank you so much for the people who have been here since like 2023. I received DMs of the people जो 2023 से they have been following me and उन्होंने literally देखा है चीज़ें change होते हुए. And I think with time you genuinely change. And when I go through my own reels, I feel like कुछ ज़्यादा ही change हो चुकी हैं चीज़ें. Mostly in a very positive way and I feel very proud of it. Proud of me for starting this thing in 2023.
Next one is learning a skill important? I'm doing a degree but don't go to college. So I got bored at home. Is there something to learn? What I think about learning a skill is that yes, it is important for a person like me जो कुछ नहीं कर रहा इस छुट्टियों में except for making reels. But apart from this, genuinely I want to learn a skill. For example, learning Adobe softwares, which will help me in my degree in my future. That is something that I want to learn as a skill. I think learning even one skill is really important. Even during your college, you should obviously try to learn something apart from college. That can be even reading, painting, making art, or making content, making reels, making songs, singing songs, like that. Moving on to the next. मेरी कमर दुख चुकी है भाई. Somebody asked me, when did you start your artwork? So I was already a very artistic and I was one of those kids जो कि क्लास में जिसको बच्चे ऐसे देखते थे कि यही आर्टिस्ट है क्लास का, यही हमारे डायग्राम्स बनाएगा. नेक्स्ट वन इज, आर यू ओपन टू डेट? नो, आई एम क्लोज. That's it about it. Next, how does it feel like to be an art influencer? If I talk about being an art influencer, I feel like I think I can influence people to do art, but apart from that I cannot. Who the fuck is getting influenced by me? But whenever I post a reel about art, the amount of hype that I get on that reel in my DMs is a different. So I obviously feel so much better whenever people like what I like doing as my favorite pastime. Moving on to the next question is, what will be the first big thing that you will buy from your own adult money? अभी मैंने इसके बारे में बैठ के सोचा and I genuinely had only one answer to this, is which is buying a room which has a window, or not or and a balcony, because in Delhi you cannot find a house or even a room with a good balcony or a window and a good view. If I will show you the window का बाहर का view यहाँ से ना, तो तुम्हें बाहर दूसरे घर की balcony दिखेगी. That is the view you get in Delhi almost everywhere. That's it. Moving on to the next. How was your drop year experience? My drop year experience was intensely bad, because even though I was not even preparing for an entrance exam जो कि बहुत ज़्यादा typical था, बहुत ज़्यादा hard था, but it was tiring as fuck because I went through feelings जो कि I never go through आगे जाके. I hope I never go through those, because you feel so lost. You feel that तुम क्या ही कर रहे हो, और within that period of time तुम्हारे साथ वाले जो बच्चे होते हैं, तुम्हारे स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं, some of them are already in college and you are stuck in a fucking room. तुम्हें ये भी नहीं पता कल को एग्जाम में क्या आने वाला है. Especially when you start comparing yourself to the people that are already in college, that makes you feel worse. It was not the best time of my life, and I would never suggest anybody to take a drop here. I think we are almost done with the questions. Will you make more chatpate reels? They are never gonna end. I think that is my personality, bhai. I will never stop doing that. Next question is about my skincare routine. Skincare routine के नाम पे all I do is just wash my face using Biotic और Simple का face wash. That's all I do. On very rare days जब मेरे को लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी लगा लेता हूँ. That is what I do. And one of the last and very important question is about my username. Somebody asked me on my live yesterday. My username goes like @MXXREOO, which is not actually Max Rio, it is Mario. If you remember from 2000s, there was a game. Even today, the game exists. It is named as Mario. When I was making this account, I had no idea what I had to name it. So I just went with something that I had in my mind at that point of time. So I just went ahead and wrote Mario, but the username was already taken. But I don't know what came up into my mind. I just replaced the letter A in the name of Mario with X, and that is how it turned out to be. MXXRIO was already taken, so I had to change it somehow. So it led me to the username MXXREOO, and I think I resonate with it so much. I feel like I cannot and will not be able to change it even in my future. I know it was very confusing, and it is very confusing. I get it, but it's Mario, not Max Rio. Even my friends call it Max Rio. But guys, it is Mario. Please remember it. And yeah, that's it for the video. We are winding this up. मेरी कमर टूट चुकी है बहुत ज़्यादा. मेरा स्टोरेज, you won't believe, 5 6 7 8 9 10 12 बार ये हो गया, and I had to delete my Spotify, my Pinterest, my Snapchat, Snapseed, everything just to film this video. So please engage with this. That's it for the video. Thank you so much for watching it. जो बाकी questions मेरे lost हो गए थे, I'm really sorry about that. Most importantly, thank you so much for making me feel this confident that I'm making this YouTube video today. I hopefully will upload it by tomorrow, maybe day after tomorrow. Thank you so much for showing इतना ज़्यादा love, प्यार. I never thought that I would get this much of support, that too online from strangers. Thank you so much. Thank you so much for watching this. And also, if I get at least 100
likes on this YouTube video. I will definitely post more here. And yeah, that's it. Subscribe to my YouTube channel, like, comment. If you're watching this on YouTube for the very first time, this is my Instagram. You can go and follow me there for the more updates. Bye. This is Mario signing off. Take care. I love you. Take care. I love you. I love you. Take care.